Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to our lecture series here on YouTube. Today, class for 7th chapter we started many days before is water. It is the lengthiest chapter in the textbook of science in NCERT. Topic today we will discuss water cycle in nature. The important topic as regards of science, and it is to be read in 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and so on and so forth. It is the most important topic in water cycle as it is a very essential phenomenon occurring in the atmosphere by which we obtain the rain, the pure form of water, and by the rain we get many useful things like agriculture, horticulture and water beds like we studied yesterday. The water table gets filled up, aquifer gets filled up by the rain water, and many aquatic organisms and organisms living in the earth get water by the process of this rain water. As much as there are rains in the atmosphere and they occur and when they occur from time to time in the year, there is a lot of agriculture which is very essential for countries like India and China, as they are more and more dependent on the agriculture. Almost 70 to 80% of the population here in India and Jammu and Kashmir is directly or indirectly dependent on the agriculture and horticulture, which is more and more dependent on the arrival of the monsoons. If the monsoons arrive on time in India, there is a lot heaps of agriculture output, and if there is a late in the monsoon arrival, western disturbances etc., so the produce gets very low and we can feel drought and hungry, and the result is the farmer suicides, which is a important concern in India. The farmers suicides as they have taken up the loans from the banks, and when there is no produce, how can they buy back the loan? So they naturally suicide and the loan remains as such as a burden on their family. So discussing the water cycle in nature, we have seen rivers, lakes and seas. When the sun rays falls on those surfaces and sources of water, the water gets evaporated and moves upwards. The water vapor rises up, the temperature goes down as we go higher and higher. जितना हम ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर कम हो जाएगा. जब ये क्लाउड्स ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो वाटर वेपर जो एयर में होते हैं, they cool at the upper altitudes. The water droplets and form लकट आब कतर छ बना water droplets. यम water droplets आसान छ हम छ dust particles सहित adhere गसान वाट लगा छ हम dust particles सहित जुरा छ water particles सहित. यदि हम water particles सहित जुरा छ तो dust छ आसान हम छ बनाओ ओबर. क्या बनाओ छ ओबर बनावान छ, clouds बनावान छ. When you will travel in the aeroplane, you will see the cloud, you are moving above the clouds and you will see the clouds below you, so you can see easily the cloud formation and how clouds are placed and put in the air. The group of water droplets along with dust particles form clouds. तो clouds जो होते हैं ये एक ही जगह नहीं रहते हैं, ये हवा विंड जो मूविंग एयर होता है उसकी वजह से ये एक दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं from one place to another. So when water droplets in the cloud come together, they form drops of water. हम बनावा drops of water. क्या बनावा drops of water यानी बड़ी पाना कतर आब कतर उतनी ऐसे लगे डॉट ही वो नाम आब कतर. येलम आब कतर बनन by the gravitational pull हम गसन heavy. येलम मन gravitational pull लग हम पेन पान ज़मीनस पे हम पेन पान हम पेन रबे हम पेन पान ज़मीनस पे हम वसन रबे. These drops of water are heavy and they fall as rain. Thus the cycle goes on and is called the water cycle in nature.
इथे पट रूद और पे प्रेसिपिटेशन गई यह पे जंगलन पे यह पे कुलिन पे यह पे जमीन पे यह वसान 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 अगर यह जमीन पे प्लेन जमीन चे आब यह तमो होलो मज पोरो मज यह वात बराबर वाटर टेबलस ताम बराबर वात यह वाटर टेबलस ताम एक्विफायर गज बे फिल सो आब मिलान इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड्स एंड स्प्रिंग्स तो वह अगर यह कंटिन्यू पकान पकान गो जंगल मज हटि पे आ पकान पकान गो यह गो कुन वाटर सोर्सस मज कल कनाल रिवर्स फाइनली वातान पे समंदरस मज बे या दरियावस मज वोत यह आब बे अत बे गसान इवापोरेशन बे वातान यह रूद पे बे पे जमीन पे बे गसान गोल तवे वन साइकिल तवे वन साइकिल क्या वन साइकिल वाटर साइकिल वन तवे तिकाज गोल करान बराबर गोल करान फ्रॉम these sources of water the water gets evaporated in the upper reaches it gets cooled down it form droplets then droplets combine to form big water drops when we move into clouds these become heavy and fall as rain these rain falls on forest small rain falls on land and rain falls itself on the sea and the ponds and lakes there the evaporation again takes place and the air moves up hence it is the circular movement so it is called the water cycle in नेचर ये आप ज़रूरी याद रखो अच्छी तरह से पढ़ो क्योंकि आगे बहुत आपको पढ़ना है आज आपने 7th में पढ़ा 8th में भी 9th में भी 10th में भी इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर आप कभी इंग्लिश में एग्ज़ाम दोगे वहाँ ऐसे भी आ सकता है वाटर साइकिल इट इज़ ऑल्सो द सब्जेक्ट इन इसे सब्जेक्ट इन इंग्लिश अगर आप कभी जनरल नॉलेज का कोई एग्ज़ाम दोगे वहाँ भी ये ज़रूरत आएगा वाटर साइकिल वहाँ भी ज़रूरत आएगा कहीं ना कहीं ये आपको ज़रूरत आएगा ये आप बहुत अच्छी तरह से जहन नशीन करो दिमाग में भरो कि वाटर साइकिल क्या चीज़ होती है होता क्या है ये वाटर साइकिल इसको इवापोरेशन क्लाउड्स ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉप्स रेन सोर्सेस फिर जाता है सोर्स ऑफ वाटर में फिर जाती है इवापोरेशन यानी बौछात बना एनीवेज टेक केयर फी अमान अल्लाह